सो गेम्स के रूल कुछ इस तरीके से हैं कि अगर मैं पहले बोलूंगी कि मींस नेवर हैव आई एवर, एंड अगर आपने वो चीज की होगी तो आप लोगों को नींबू स्क्वीज करना रहेगा अपने माउथ में। तो उसके पहले आप लोग अपना माइक ऑन करके पहले बोलोगे, सो वी कैन पिन यू एंड रिकॉर्ड योर रिएक्शंस। टिकटॉक और रील्स गाइस, आप लोग ने रील्स नहीं बनाई है, टिकटॉक नहीं बनाया, इंस्टा पे ओके हाँ रील्स करना पड़ेगा। स्क्वीज योर ऐसे लेमन। करो 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 करो। यस गो ऑन, गो अहेड। कर लो, टेस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं होगा, ऐसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग पनिश्ड इन अ क्लास फॉर यूजिंग मोबाइल फोन। मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए क्लास में किसी टीचर ने पनिश किया या डांटा या कुछ भी कहा या क्लास में बेइज्जती करी। 7 people साथ ऐसा हुआ। ओके क्या मतलब आप लोग फोन यूज नहीं करते हो कि इतने ट्रेंड हो कि पकड़े नहीं गए आज तक? हाँ यार, मैं ऐसी फर्स्ट थोड़ी- डे इस्तेमाल की थी, फर्स्ट डे ट्रेंड पकड़ी है गई। भाई साहब, फोन तो बहुत यूज करते हैं पर पकड़े ही नहीं कभी। न्योनी हाय हाय आप, so you have to squeeze your lemon. अभी राइट नाउ हाँ right now. राइट नाउ। Right now, right here. You do it every day or what? You're not getting the expression. I can literally squeeze the whole lemon in my mouth without clenching my face. So yeah. हाँ तो 2-3 लोगों का कर दो, ठीक है, मेरा हिस्सा भी कर लो। बस that's all. पूरा नहीं. Okay, so what was your experience? I didn't really feel anything. कब That's punishment my daily मिली? kind of thing. That's my daily kind of thing. I literally squeeze lemons in my mouth every now and then. I'm literally about having lemon. fun right now. This is so weird. यार अब नींबू स्क्वीज करो। हाँ जल्दी से. काफी बेहतरीन। अब जल्दी से अपना एक्सपीरियंस भी बताना है. हाँ, कब पनिशमेंट मिली? मेरा जूलॉजी का क्लास चल रहा था और हम ये तीसरे सेमेस्टर की बात है, थर्ड सेमेस्टर की बात है, और मैं पकड़ी गई थी बहुत गंदा। उन्होंने मुझे क्लास से निकाल दिया था। मैं बोला स्टैंड अप एंड यू जस्ट गो, नो नीड टू स्टडी व्हेन यू हैव द स्कोर, यू गो आउट। पूरी बेइज्जती हुई थी मेरी। तो दैट्स द एक्सपीरियंस। Okay. Okay, so the next question is, never have I ever tricked housekeeper for spending night outside. ये तो बहुत लोगों ने किया होगा. हर्षिता. हाँ यार, ये ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन है भाई। देखो मैं ना पकड़ी नहीं गई, बट मैं एक एज था, मैं अगर पकड़ जाती तो नेवर हैव यू एवर कॉट इन एग्जाम व्हाइल चीटिंग। टीचर ने, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं टीचर को शक हो रहा है मेरे पे, ऐसा समथिंग लाइक दैट। यार चैंडल, तुमने मेरी नाक कटवा दी। हम लोग बहुत सारे बच्चे हैं, चीटिंग नहीं करते। महिमा कश्यप दी ने हैंड रेस किया है. हाँ दी, आप अपना कैमरा ऑन तो कीजिए. मतलब और हमने किए तो हम लोग शरीफ नहीं है क्या फिर? चीटिंग से कहाँ शराफत कैमरा ऑन है। Am I audible? Yes, yes, I can see you. इसने तो आँख में ही डाल दिया। फैंटास्टिक. Thank you so much. हाँ, experience. हाँ, अच्छा बता रहा है। अरे आई थिंक मैथ्रो का एग्जाम था सेकंड सेमेस्टर में, और रूम नंबर 1 में बैठे थे हम, द लार्ज वन। तो
I was obviously copying my friend's answer. चाची का जो मेरे आगे बैठी थी और टीचर ने 2 बार देखा और सेकंड में ही कहा मुझे बोला कि तुम लिखो। ठीक है, चाची मुझे सबसे आगे का अपने कोने में बिठा दिया, मुझे बोला लिखो। बहुत घटिया पेपर गया, तो मेरे 100 में से 54 आए थे उसको। Wow. Okay, so now let's move on to our next question. Okay, so never had I ever had a crush on my friend's boyfriend. भाई साहब, काफी विवाद होने वाले हैं यहाँ पे। भाई कोई नहीं बताएगा आई थिंक। बट शायद लोगों ने हैंड रेस किए हैं। We won't ask you कि किस पे था, so you can tell us. Hello everyone. ज्योत्सना दी बोल रही हैं शायद। कौन बोल रहा है? अंजलि. ओके दी। अंजलि. Hi Mahima. Hi Akansha. Hi Nandu. हाय। Hi ओके Tanvi. दी, तो आपका नींबू रेडी है? अब मेरे क्या बताना है? क्रश बताना है ऑन फ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कौन था वो? मेरा आपके फ्रेंड पे? नहीं भाई, आपके आपको फ्रेंड अपनी का। फ्रेंड की आपको अपनी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड की पर क्रश था ना? वी वर आस्किंग, सो वी वर आस्किंग दैट एक्सपीरियंस। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। किया फालतू में कर लिया भाई। हाँ, फालतू में मतलब ये सरासर झूठ है। और किसी ने हैंड रेस किया था? मेरी महिमा दी शायद हैंड रेस की हुई है। और नहीं, मैंने हाथ नीचे करना मैं भूल गई थी। सॉरी, गलती से मतलब यहाँ से किसी को रिस्क ही नहीं लेना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। डीएम में मिलेंगे सब लोग, सारे लोग DM नहीं में नहीं, रिस्क की बात नहीं है। सुनो। people, पंखुड़ी। हेलो Yes. हेलो, दर्शना, इस पे क्रश वाली बात है। एक्चुअली मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ। द थिंग इज कि जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी स्टोरी। Okay, start. वी आर रेडी। पहले नींबू। दैट तो ये फर्स्ट ईयर की बात है और मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद हैं। तो ऑफिस के बगल में वो रोजेस वाला गार्डन नहीं है, उस टाइम पे काफी ज्यादा रोजेस थे वहाँ पे। तो अब उन्होंने ना उसके चारों तरफ ना बुशेस लगा रखी है, तो मतलब यू कैन नॉट इजीली गो देयर। तो मैं बस ना ललचाई नजरों से मैं बुशेस के ऊपर से देख रही थी कि मतलब हाथ में आ जाए, दूर से हाथ में आ जाए। और मुझे नहीं पता था कि पीछे से कोई नोटिस कर रहा है। ठीक है, मेरे साथ में शायद पता नहीं सौम्या थी या कोई और लड़की थी। तो मैं उनसे बोल रही थी यार चलो ना यहाँ से तोड़ते हैं। तो वहां पर तो हाथ नहीं जा रहा था। फिर आगे जाके पता नहीं एक बहुत सुंदर सा एक्सोटिक सा फ्लावर था, तो मैंने वो तोड़ के अपने बालों में लगा लिया। और पीछे से वो सर थे या भैया, आई डोंट नो, ही वाज अ एल्डरली मैन वो गाय। और उन्होंने बोला बेटा आपको पता है बीएचयू कैंपस के अंदर ना फ्लावर्स तोड़ना इज नॉट अलाउड, यू नो दिस इज वेरी रॉन्ग एंड यू शुड बी फाइंड एंड ऑल। तो वो उस टाइम पे फर्स्ट ईयर में थे और हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे कि अब क्या होगा, ये लोग मैम से तो नहीं बोल देंगे जाकर। फिर हमने सॉरी बोल दिया। फिर आई गेस दैट वाज माय बर्थडे। तो मेरे साथ में जो लड़की थी उसने बोला कि अंकल प्लीज इसको आज जाने दीजिए, इसका बर्थडे है, इसलिए इसने अपने बालों में फूल लगाया है। उसके बाद से भी मैंने बहुत बार फूल चुराए हैं गार्डन में से, बहुत बार, बट पकड़ी नहीं गई उसके बाद में। वाओ। चलो शाकिर, you have one more question। और भी थी ना, मुस्कान दी भी चलो थी, मेरी तरफ से कितनी दी ये भी थी? स्पेशल वाला एकदम बोनस वाला क्वेश्चन। Never have I ever received a DM request from Himu Baba, Himanshu, Yatuvanshi, Clue, yes. ओके, भाई बहुत साहब, सारे लोग होंगे फिर तो। हैंड रेजिंग का बढ़ता ही जा रहा है लगातार। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये तो। पूरा एमएमबी प्रताड़ित से क्या हमसे प्रताड़ित।
Get ready for our next game. Guess the song. So 20 seconds है आप लोगों के पास. Your time starts now. 20 seconds. आप डालो नाम अपने नाम आप डालने हैं. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, time is over now. Stop in the name of. Fast, guys. मेरी महबूबा Okay, song. we have the answer. We have the answer. भाषा. Sneha Pandey is the winner. Time क्या up. बात है. एक्चुअली सॉन्ग का नाम नहीं पता था बट लिरिक्स पता है. भाई play this song. Play this song. Don't tell me if we have the right answer or the wrong answer, okay? Yeah. Okay, okay. मेरा कीपैड काम कर रहा अभी. जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, मेरी महबूबा, मेरी तकदीर है तू, मचल के सामने आ, मेरी महबूबा. Okay. तो अभी इस पे जो पार्टिसिपेट किए थे, नेक्स्ट सॉन्ग. Pause it. Okay. मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा. लेकिन यस को इस पे फ्राई होगा. एक्चुअली मेरा कीपैड काम नहीं कर रहा है. Okay, so शायद दीक्षा दी का आंसर पहले आया था. Is the time up? मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा. होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया. एक गर्म चाय की चाली हो. Okay. एक गरम चाय की प्याली हो, पिलाने वाली हो. कोई मुझको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो. हाँ. दीदी तेरा देवर दीवाना. दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना. जिगर से पिया. बीड़ी जले ले जिगर से. हमारे सीनियर्स काफी इंटेलिजेंट है, मतलब एक सेकंड भी नहीं लगता. जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है. कीपैड. हाँ दोनों. बेबी सॉन्ग. जस्टिन बीबर. Yes. ये सारे मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं. आप लोग को सुनने को मिलेगा. फील प्रिविलेज. आंसर दिया. You just want attention. भाई काफी फास्ट. मैसेज कर दो. You don't want my heart, baby. You just hit the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. कर देना आप जब पॉसिबल होगा तो. Levitating, Dua Lipa. You're levitating. And let them drop.
Not the dancer. It's levitating. Dua Lipa. No one has dropped the chat box. Okay, please study. Need a little bit of company. You met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way. Shape of You. I'm in love with Shape of You. यार आप लोग सॉरी काफी गाइस। बहुत तेज, बहुत तेज। भाई बहुत तेज हो गए हैं। ओके लास्ट वन। Love story. Love story. Somewhere we can be alone. I'll be waiting. All there's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby. Just say yes. कलियों जैसा हुस्न जो पाया, हर अदा में नूर है आया। साथ मरे और 77 घायल, बेमत रब को क्यों ऐसा बनाया। तेरा जिससे पड़ गया पाला, अच्छे को गलत कर डाला। तेरा नहीं तेरा कोई दोष, दोष तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। Shit. How low can you go? नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश। नहीं तेरा, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मदहोश तू हर वक्त वक्त। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। अखियां फरेबी शैतानी है, इश्क में तेरे मर जानी है। इतना कोई खुद को बचाए, आग दिलों में लग जानी है। जादू ऐसा कर डाला,
ना होश किसी ने संभाला तेरा, नहीं तेरा को। Now inviting our super seniors and the finalists for the farewell round. So first I would like let to them invite all come. the super seniors. Are you all here? Are you all here? Yes, Super seniors. Okay. Yes. Also, the 6 contestants, I'll name them: Tanvi Sharma, Neha Yeah. Pandey, Mahima Kashyap, Rumela Pani, Kumkum Maurya, and Raj Nandini Didi. Yes, Okay. अरे इतनी weak नहीं थी. Okay. So all the 6 participants, super seniors, नेहा पांडे, नेहा दीदी, आ जाओ मैदान पे. Hi. Choose any number. 5. Okay. So Sneha. Hi, bacha. Okay, I question for you. Which person or any famous personality you admire the most? For what qualities you admire them in your life? Can they be someone from my, like, someone I Yeah, personally any know, not like- person any person or any famous personality. It's your option. my grandfather. Okay. Like, he's a self-made man. He, like, his family, there was a time when he wasn't even able to, like, afford food for 2 times a day, and then he did job, he built a family all on his own. So I really admire him and I look up to him. Okay, thank you. More question, I guess. Yeah. 2 yeah, questions. Wait. Yeah. Yeah, wait. Second question, Sneha. Sneha, listening? Yeah, Di. Second question is, what changes you explored in yourself during these 3 years in MMV that were lacking somewhere before? First and the foremost was I wasn't someone who, like, used to, like, seize the day. I was like, कि ठीक है, थोड़ा सा, like, laid back attitude, which was something I overcame during these 3 years. Then another thing is my grammar and my editing in English. That was something I improved and learned a lot from my from my batchmates and my friends there. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Dee. Thank you, Riya Dee. Thank you, Neha Dee. Thank you. Next is Mahima Kashyap. Mahima दीदी, आ जाइए. Mahima Dee, now. Hi, am I audible? Yeah, you are audible. Hi. Dee, now choose a number. Hi. Dee, choose a number between except 5 and 4. 1. Okay, Shruti Ola Dee. Yeah, I'm here. Hi, Mahima. Shruti Ola this side. Hi, Didi. How are you? I'm well. How are you? I'm well too. Thank you so much for asking. All right. So here's the question for you. The first question is from MMV, right? What virasat are you taking away from MMV? The virasat that I will be taking away from MMV is every single moment and every single memory that I have with my friends. Be it the fights, be it the group study sessions, be it going to the ghats, be it going to Lanka. For no reason, I will be taking everything with me. Okay, fine. Another question for you is, if you find yourself deserted on an island, what is that first thing you will do? Thank you for the question. If I ever might find myself deserted in an island, the first thing I would do, I think I'll be really glad that I was left alone. I have been longing to do that for a while. And I would look for food. I cannot do anything if I haven't had any food. And then I would probably sit down, think what I can do to go back home, and yeah, I think I'll have fun alone. Okay, fine. Thank you, Mahima. Thank you. Thank you, Okay, Didi. thank you, Dee. And Shruti Dee, please.
Okay, Tanvi di and Shruti di, you can carry Hi, forward. Shruti. Hello, Tanvi. Hi. So your first question is, if you are given a chance to choose a place other than your hometown to spend your eternity, which place would it be and why? Thank you for the question. I think that place would be Banaras, because sometimes I think about my retirement, that what would be the places where I would be settled when I would be retired, and there is just one place that comes into my mind, that is Banaras. And Banaras, because this is the city where I found myself. I did not know anything about anyone, any person, neither about myself. But Banaras is the place which, now I can say that I know who I am, where I belong, what are my dreams and ambitions. And, there used to be a special place in Banaras where I used to go daily. So, I used to go Ghats daily. और वहाँ पर ऐसा होता था कि मैं ऐसे घाट से चलकर मणिकर्णिका तक जाती थी. मणिकर्णिका पे मैंने देखा था कि कितने सारे फ्यूनरल पायर्स हैं वहाँ पर. एंड फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट देयर एंड आई वाज स्पीचलेस. I was not able to think, I was not able to speak anything, I was speechless. So it might be sounding weird to someone, but that place changed me a lot. So a place where I would like to spend my eternity is Banaras. That's good. The second question for you is, when you will reach your dream position, what will be that one gift which you would like to give to MMB as an alumni? That one gift would be exposure, because I myself as a student faced this thing a lot. I was looking for internships, but I was not able to find any single person who could give me the chance. And while I found one or two persons, but they were like they wanted a content writer, but they were not paying enough, or they were not talking about payment and all. And if I will like to provide some one thing to MMB, that would be exposure. Exposure as in experiences in our daily life, experiences as an occupation, as a working woman. Thank you. Okay, thank you. All the best. Thank you. Thank you, Di. Thank you, both of you. Now I would like to invite Raj Nandini Di. Di? Hello. Am I audible? Hello. Yeah, you are audible, Di. So I would ask you to choose a number between 3, 2 and 6. 3. I would like to go with 3. Okay. Shrestha Di? You got Di? me. Yeah. Hi, Ashley. And before starting this, I would like to say कि you all are looking so pretty. ऐसा पूरा MMB एक screen में आ गया. I just feel after so much time. So pretty. Okay, so my first question for you would be, if your life was a movie, which movie would it be? I would like to go with one of my favorites, Ye Jawani Hai Diwani. Almost everyone in my hostel knows about it. I'm crazy about that movie because Naina is someone I can resonate with. I find myself secluded in a corner whenever there is a group discussion, but if I get a single topic that's mostly books, and then I rumble about it for hours. So Ye Jawani Hai Diwani would be my life movie. Right. Yeah, we all need a bunny in our life anyways. Your second question would be, say something that only 2 MMBians in a room can only understand or relate to. One thing that only MMBians would relate to if they are sitting in a room full of strangers. Okay. साथ में चलेगी, फी सबमिट करने जाना है, अकेले भी जाने का मन है. Okay. I think the whole MMB can relate to that. I would say Auntie Ki Dukaan is more relatable, don't you think? There isn't Auntie Ki Dukaan anywhere else. Anyways, great. Thanks.
थैंक यू रंजन। थैंक यू दी। पीएमसी पे मिलते हैं। नाइस वन। एनएसपी तो सभी जानते हैं। आइएगा। एनएसपी तो सभी जानते हैं। यस। ओके ओके, सेकंड लास्ट। Choose a number between 2 and 6. Okay, probably 6. Okay, so it's Kanishka Di. Are you here, Di? Yeah. Am I audible? Yes. Yeah, you are audible. Hi, Kumkum. Hi, Kanishka Di. How are you doing? Good Di. What about you? I'm fine. So my first question will be, Yes. what is your course that you selected? Why did you choose that course? And how do you think that your decision might impact the world? Oh wow, this is something that is very close to me, because see, I have qualified for IIT also, but the thing is I dropped that. And what I did is, even this is something that my parents and obviously society will not allow you to do graduation, obviously BA. But the thing is, I am very, I am very fond of geography. The reason being, my father is in Air Force, and we used to shift from here and there and here and there. So I have a hell lot experience of places. And the more places I visit, the more the thing I get exposure, and the more I want to know. So there is an explorer inside me, and that always motivate me to pursue geography. That is why I quit engineering in my second year and I came here. This is the thing that I would like to say, and that is the reason why geography is my favorite subject. So my question was also that how do you think your decision might impact the world? As far as world is concerned, I have not think about that much big, but yeah, sure. I can have an impact on society, I can have an impact on me, then for sure I can bring a change. My aim is to pursue IAS. So, and geography being my subject is my optional as well. And I am actually currently moving in that way. So let's see, if I get into it, then for sure there is a change. There will be a change, I consider. Yeah, sure. And about the world impact, actually I have a vision. I have a very it is like a dream or so. Actually, I want to write a book of collection of my experiences and my exposures. So it is something that I can give to world. Thank you. So the second question is about MMB. Describe your secret spot in MMB. That one place where you could find solace or happiness. That one place you don't want to share with anyone else in MMB. Please, can you repeat once again? Your voice is breaking. Please. Describe that one secret spot in MMB. That place where you find solace or happiness. You do not want to share that spot with anyone else. Actually, my roomies will relate it. It is inside my blanket. This is the place where I am so much comfortable that actually my roomies are like कि चल बाहर चलते हैं, like चल यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं. I'm like जाओ ना. And when they go na, then I am like कम्बल ओढ़ लिया. And I used to do every sort of thing. I mean, अपनी creativity, अपना सब कुछ in winters probably, and in summers the garden is my favorite area where I used to explore myself, and I used to find happiness because I love to capture butterflies and all stuff. So I used to I find my happiness there. Thank you, Kumkum. Thank you very much for your answers. Thank you so much, Di. Thank you so much. Have is 2, so you have to go with that. No option left. Okay. So Aditi Di. How are you? Hello Di, I can't see you. I'm fine, and you? Yeah, I'm totally good. So my first question to you can hear me, right? Yeah. So my first question to you is, what is the most important issue your generation is facing right now?
Okay, my generation is facing the issue the most. I think the coronavirus has almost like the shutdown and the lockdown everywhere. We are stuck in home, and we need freedom very much, and we are lacking it right now. When we had an opportunity to go back to our hostels, we were really very much excited. I think everyone will agree with me, and that is the thing. I think in the age we want to do something for our country, for ourselves, for our family, and we are just in our home, we are already in a virtual meeting, and there is no face-to-face conversation, nothing. And the freedom we need the most is being lacked the most in the like extreme time. Okay, now my second question to you is, if there's one thing that you want to change in MMV, what it would be? Okay, it would be I think the pajama and टी-शर्ट वाला कॉलेज गोइंग जो हम लोग का इमेज है ना, कि हम लोग बस पजामा एंड टी-शर्ट पहन के जाते हैं कॉलेज। मुझे लगता है थोड़ा सा तो होना चाहिए भाई, कि थोड़ा तैयार होके जाए। बाहर वाले देखेगा तो क्या सोचेगा कि हम लोग बस टी-शर्ट, शॉर्ट्स एंड पजामा पहन के चले जाते हैं, प्रिपेयर नहीं होके, स्पेशली हॉस्टलर्स वाले। तो मैं ये चेंज करना चाहूंगी भाई, कॉलेज लाइफ में कोई फोटो वोटो भी नहीं खींच पाते, इतना घटिया तरीके से हम लोग जाते हैं। तो आई थिंक यही मैं चेंज करना चाहूंगी, थोड़ा सा तैयार होके जाए। बस मैं खुद भी उसमें हूँ कि जो तैयार होके नहीं जाते हैं, तो मैं यही चाहूंगी सब लोग तैयार होके जाए, थोड़ा फोटो वोटो खींचा जाए, कॉलेज मेमोरीज बनाए थोड़ा सा, बस यही। थैंक यू। Okay, thank you. And by the way, I can totally relate to it. Okay. Everyone can relate, I guess. Yeah, definitely. I can Especially hostlers. I can see the faces of my friends like Rajnandini, Tanvi, Mahima, Vandila, and everyone I know that they all are like me, just pajama and shorts wale. Thank you. Okay, thank you. Okay, so thank you our seniors and super seniors for your valuable time. Without you, all this would not be possible. Hello everyone. First of all, I would like to thank my juniors for giving us this amazing virtual farewell. It is much more than what we expected. And then I would like to thank my batchmates, without whom there would be no journey, there would be no farewell to be thankful for. And they all, in one way or the other, contributed to what I am today. And I'm really grateful that I had such an amazing batch, such amazing batchmates. And lastly, I would like to thank my seniors for sparing time out of their busy schedules for us, for this event, and for their judgment. Thank you so much, everyone. Hi everyone, thank you guys for Miss Athena title. This title is very special for me as it recreated my memories from being Miss Talented to Miss Athena, and it gave me so many memories to cherish on. Thank you so much juniors as well as seniors for this title and for making us feel so very special. Thank you guys. Being a COVID batch, we are always going to cherish this virtual memories. Hello everyone, I'm Tanvi and I'm the winner of Miss Farewell Title 2021. In this video, I would like to thank my juniors who have done such an outstanding job in pulling off this entire event. Seriously, you guys compiled the 3 years of our college life, all those memories, all that nostalgia in the form of 6 to 7 YouTube videos. And really, I can't be more grateful to you. And I would like to thank my seniors who came to the meet, who judged us on the basis of our performance. And I would like to say college is not what it used to be when you guys were there. Whenever I used to go to the college, I used to feel that something is missing just because you were not there. And in the end, I would like to thank my batchmates for complying with our juniors, for helping them, and for voting all of us, for voting for our titles. And I would like to say that I can't be more grateful to all of you, especially my juniors who have personally messaged, 200, 300 girls of my batch. Truly guys, when you were talking about farewell, I was thinking of something too mainstream and something which would be boring. But this was not boring at all. This was really very interesting, and this is the memory which I would hold dear to my heart forever. Say you won't be gone from my